Hello everyone. Let us continue with the chapter Magnetic Effects of Current. Today we'll be going to study force on a current carrying wire when placed in a uniform magnetic field. To derive the expression for force on a current carrying wire placed in uniform magnetic field, we have considered PQ as a conductor of length L, area of cross section A, and it is carrying a current I from x dash to x. Let us consider that it is making an angle theta with the magnetic field. तो B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट एलिमेंट के साथ या करंट के साथ वायर के साथ एंगल बना रही है थीटा. Now as we have read earlier, the drift velocity is always opposite to the flow of the current. So this is the direction of the drift velocity, opposite to the flow of current. So let us consider, let V be the drift velocity and minus E is the charge on an electron. Force acting on a charge, इसका एक्सप्रेशन हमने पहले ही देख लिया है that F is the force acting on a charge which is placed at an angle theta to the magnetic field. तो force का फॉर्मूला है QV क्रॉस B, जिसको हम लिख सकते हैं as, now F is the force acting on charge minus E and magnetic Lorentz force के फॉर्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा minus E because E is the charge on an electron, Vd is the drift velocity of electrons, so it will become Vd cross B. Now if N is the number density means number of electrons per unit volume, then the total number of electrons in this conductor, इस पूरे कंडक्टर में total number of electrons जो होंगे उनको हम लिख सकते हैं as number density into the volume, or you can write N into volume and volume is area into length. तो ये हमारे पास आ गया total number of electrons in this conductor PQ. So to find the total force acting on this conductor, we can write capital F as total number of electrons multiplied by the force acting on one electron. तो हम इसको लिख सकते हैं as N AL E VD cross B. So this is the total force, but we also know that the current is related to the drift velocity by a formula which we read in the chapter current electricity. The relation between current and drift velocity is I is equals to NEA VD. Now multiply both sides by L. We'll get IL as NEAL VD. हमने दोनों साइड्स पे इसको L से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये IL क्या मिल गया, करंट एलिमेंट, and this direction of current is opposite to the direction of the drift velocity. So IL vector is equal to minus NALEVD. We can substitute in the expression for force. तो हमारे पास जो force है वो बन जाएगी I L cross B, which can be remembered as F is equals to Bill sin theta. इसको हम बिल से याद रख सकते हैं, where theta is the angle between the current element, या आप कह सकते हैं angle between the conductor and the magnetic field. Now the maximum force will be experienced by the current carrying wire as Bill, और ये तब होगी जब हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री है, यानी जब करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द एंगल इज 0 और 180 डिग्री, विच मीन्स व्हेन द करंट कैरिंग वायर इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है और करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर भी उसके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी. नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन वील यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फॉर अ सिंगल चार्ज द फॉर्मूला इज F is equals to QV cross B, and for a current carrying wire the formula becomes F is equals to I L cross B.
for both the cases, Fleming's left-hand rule can be remembered as father, mother, child, where this first finger gives you the direction of the magnetic field, or you can write it as magnetic field mother. This gives the direction of current or the velocity vector, so it can be remembered as child, where this child stands for current. And F stands for father, or you can remember it कि ये हमें फोर्स के बारे में बताएगा. तो हम इसको फादर मदर चाइल्ड की फॉर्म में याद रख सकते हैं, वेयर द थंब गिव्स यू द फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड, and the middle finger gives you the current or the velocity of the current carrying wire or the charge. Now for example, you have a question, magnetic field at a certain place is 3 into 10 to minus 5 Tesla and the direction is from south to north. A conductor carrying current of 1 ampere is placed, दो केसेस दिए हैं हमें. What is the force per unit length on it when it is placed on a table and direction is from east to west. तो फर्स्ट केस में करंट में कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो इन द फर्स्ट केस मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दी गई है वो है 3 into 10⁻⁵ टेस्ला. द करंट इज़ 1 एम्पियर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर, क्योंकि उन्होंने कहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है. पहले केस में जो करंट है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. So you can clearly see that in this diagram the direction between the magnetic field and current is 90 degrees. So we'll write theta as 90 degree. We'll use the formula of force as BIL, यानी जिसको हम याद रख सकते हैं बिल से, तो बिल साइन थीटा, जिसमें L भी 1 है, I भी 1 है और साइन 90 हो जाएगा 1. तो हमारे पास जो फोर्स है वो आ जाएगी 3 into 10⁻⁵ Newton per meter because it is force per unit length. Now in the second case it is given that the direction of the current is from south to north, यानी इस केस में करंट की डायरेक्शन भी वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की है. So when the current is from south to north then theta will be 0 and using the formula F is equals to BIL sin 0 you will get the force as 0. तो second case में force जो है वो 0 हो जाएगी by applying the rule or by finding the angle. We'll study the next article in the next video, which is force between two parallel conductors. Thank you.